Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ श्री A.K. भट्टाचार्य। श्री भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu, and welcome A.K. sir to the program. A quick look at the headlines. GDP of the country grows 6.3% in the July to September quarter of the current financial year. Index of 8 core industries post a growth of 0.1% in October, and domestic stocks close at record high. Sensex finishes above the 63,000 mark. Nifty settles above the 18,750 level. मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर की तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद 6.3% की दर से बढ़ा। 8 मूलभूत ढांचा क्षेत्रों ने अक्टूबर में 0.1% की वृद्धि की दर्ज। और घरेलू शेयर बाजारों में रिकॉर्ड समापन स्तर पर हुए बंद। सेंसेक्स 63,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 18,750 के स्तर को पार कर गया। We start with the first story of the program. The gross domestic product GDP of the country grew 6.3% in the July to September quarter of the current financial year as compared to 8.4% in the corresponding quarter last year. According to the data released today by the National Statistical Office NSO, during the July to September quarter, the country's gross value added GVA, which is GDP minus net product taxes and reflects growth in supply, grew 5.6% against 8.3% a year ago. During the reported quarter, trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting registering a growth of 14.7%, which was higher as compared with 9.6% a year ago. The GDP of the country had grown 13.5% in the previous quarter. A.K. sir, these GDP growth figures, do you think they're on track with the recovery we are seeing? Well, if you look at the annual projections, which is that Indian economy will grow by 7% in the current year, these seems to be on track. What you can understand from these numbers is that the first half of the year, for which the data is available, the economy has grown by around 9.7%, which means that in the remaining half of the year, the economy has to grow by around 4.6 or 4.7% to achieve a full year's target of 7%. Right. So to my mind, achieving 4.6 or 4.7% growth in the remaining 2 quarters, which is the second half, will be a task because the global economic headwinds are evident. Exports are slowing down. Interest rates are rising. Inflation is not coming under control. I'm talking about the global scenario right now, with which Indian economy is closely connected. So 4.6% in the second half is not impossible at all. It can be realized. So therefore, the annual figure of 7% looks to me within reach. Having said that, there are some data points in the GDP numbers which need to be underlined. Right. And if we understand those numbers, we see both the positives and the negatives. The positives first, the investment rate has suddenly picked up. When you go by the gross capital formation figure, you see a growth of 10%, 10+%. Similarly, the personal consumption growth has gone up.
where you haven't grown is the government consumption, and you can see from the government data, that government is controlling its expenditure and raising more revenues to keep the fisc under control. So this is the expenditure side. But on the production side, there are two worry points. The manufacturing sector has seen a contraction of 4.3% or so. If the contraction had not taken place, our 6.3% growth would have been much higher. Okay. Similarly, mining has seen a contraction, but on the other hand, the services sector have bounced back with 14% growth, as you pointed out. Now, that means that the contact-intensive sectors are back in action. The aviation sector, the hospitality sector, the utilities sector, they are back in action post-COVID. This, in brief, is actually what has really happened to the Indian economy, the second sector of the economy. ये सितंबर क्वार्टर के हैं रिजल्ट, सो कुछ सीजनल फैक्टर्स भी होंगे, और दिसंबर क्वार्टर जिसमें ज्यादा कंजम्पशन पिकअप होती है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, उसमें हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन माइनिंग, इन सब में पिकअप की हम उम्मीद कर सकते हैं? माइनिंग में जरूर पिकअप करेंगे, क्योंकि माइनिंग जो बरसात के मौसम में थोड़ा ढीली जाती है, कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा ढील आती है, पर जरूर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव में तो जरूर आ जाएंगे हम 4.3 के कंट्रैक्शन से, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अक्टूबर का महीना अच्छा गया है। जरूर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरी जो तीसरी तिमाही जो है उसमें आप जो ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखेंगे, और जो सेकंड हाफ का जो ग्रोथ 4.6-4.7% आप सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि एनुअल ग्रोथ रेट 7% के करीब जा सकता है। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट की, जिसने काफी पुश दिया, अगर हम देखें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, इनके लिए अभी जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसमें भी एक स्पेशल प्रोविजन किया गया था 50,000 करोड़ का। सो आपको लगता है कि ये जो एक टारगेटेड रिफॉर्म्स अप्रोच है उसको जारी रखना जरूरी होगा सरकार के लिए? मैं इसको देखूंगा कि किस तरह से जो प्रोडक्शन बॉटलनेक्स कोविड के बाद आई थी, उसको रिमूव करने की जो स्टेप्स लिए गए थे, उसका पूरी तरह से जो उसको इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी को मिला है। क्योंकि विदाउट दोज ईसीएलजी की बात कर रहे हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आप नरेगा की बोल रहे हैं, या जो फ्री फूड राशन स्कीम से जो बेनिफिट जो इकोनॉमी को मिली है, जो उससे जो डिमांड और सप्लाई दोनों में जो तालमेल होनी चाहिए उसको बरकरार रखी है, उससे मैं समझता हूँ इकोनॉमी को काफी बेनिफिट तो जरूर मिला है। और ये जो चैलेंज आपने कहा कि किस तरह से इन स्कीम्स को आगे रखना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, ये निर्भर करता है कि जो अक्टूबर से दिसंबर की ग्रोथ रेट कैसी आती है और जनवरी टू मार्च की ग्रोथ रेट कैसी आती है। ये दोनों में निर्भर करेगा कि आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है और भी आप चालू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। So if you want to see a balance, as you said, in the next two sectors, what are the figures we should be looking at to ensure that, production also, the investment and the production that we're doing? So investment is increasing, but how do we get more balance? What should we look at in the future? Well, I think it's very important to see that exports is almost around 20% of the Indian economy. Now, there were some early signs which showed that exports are probably decelerating. In October, exports fell by 17%. Now, hopefully, that's only 1 month phenomenon. Hopefully, exports will pick up once again, because that's a figure in October, and things were bad globally also. Now, if exports pick up, I would imagine that with the support the economy is getting through higher investments, things should get better. Similarly, what is important is what kind of support system or the taxation benefits that the government can provide in the next budget through taxation rationalization or taxation reforms, that demand is sustained. So I would say that a lot depends on how the global economy fares.
and in India, if you look at the investment side as well as the personal consumption side, these are two positive signs which we must take note of. So do you think that somewhere our dependence on ensuring that services somewhere take the figures up rather than the core industries and the core production that we spoke about? Do you think that trend is okay, or because it's a volatile... Oh, certainly. I think, as you know, that the services account for almost 60% of the economy. But services don't account for an equal share of jobs. It is agriculture which takes around 40 to 42% of jobs. Right. Whereas agriculture is doing well. Agriculture, mind you, is a bright spot in the Indian economy right now. It grew by 4% in the second quarter. Now, but then the real worry is the manufacturing sector, because if we don't get back to a robust growth path in manufacturing and mining, that's where the urban small-scale sector, medium enterprises, the jobs will get created. Manufacturing jobs are very, very important, and urban employment is very critical, also from economic and political point of view. So, अगर हम टैक्स कलेक्शंस की बात करें तो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो लगातार 1.5 लाख करोड़ के जो फिगर है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस में भी 20% से अधिक का उछाल है. सो क्या ये एक डिमांड रोबस्ट रहने की इंडिकेशन नहीं दे रहा है, और आपको क्या लगता है कि इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर ये जो आप बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है शायद वो रिवर्स हो? देखिए, जो जीएसटी के कलेक्शन की जो आपने बात की और जो जीडीपी के नंबर हमारे सामने हैं इस वक्त, उसको अगर आप सामने रखें तो क्या जो साफ चीज जो एक प्रतीत होती है वो ये है कि आपकी जो टैक्स कलेक्शंस की एफिशिएंसी हम देख रहे हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आई है. टैक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, टैक्स और ई इनवॉइस बिल से, और जो टैक्स नेटवर्क की जो एफिशिएंसी आई है इस वक्त, उससे ये जो ग्रोथ जो आ रही है वो ज्यादा आ रही है. हाँ, इकोनॉमी में ग्रो भी हो रही है क्योंकि सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ के लिए डबल डिजिट में सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रही है. तो मैं ये समझता हूं कि ये जीएसटी की जो जितनी बात आपने कही उसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज हैं. सर्विसेज तो मैंने कहा कि वो 14% ग्रोथ है, और गुड्स की बात जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कंट्रैक्शन है. तो ये एक दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी का जो रोल जो है उसको कम कर नहीं देख सकता है. तो आपको लगता है कि जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस्ड स्कीम्स हैं, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनफैक्ट एमएसएमईज के लिए भी हैं, उन पर उनके जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर ध्यान दिया बहुत ज्यादा. पीएलआई तो अभी शुरू हुई है, 1-2 साल में हुए हैं. उसके एक्सपोर्ट्स में थोड़े बहुत जो मोबाइल फोन में हम देख रहे हैं कि मोबाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं फोन की, तो अभी मतलब बहुत जल्दी होगा पीएलआई के ऊपर कहना कि पीएलआई किस तरह से इकोनॉमी की वृद्धि दर में बढ़ोतरी लाई है. पर हम वो 2-3 साल बाद शायद देखेंगे उसको कि उसका क्या परिणाम है. पर इस वक्त जरूरी ये है कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को हम बरकरार रखें, जिससे कि जो ग्रोथ मोमेंटम जो है ये जो 6.3% का आया है वो पिछले 2-3 तिमाही में कंटिन्यूअसली जो कैपेक्स जो बढ़ता गया उसी का ये परिणाम है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगले तिमाही में आप कैपेक्स और उसके साथ साथ डिमांड में जो वृद्धि हुई है उसका भी परिणाम आप देखेंगे. We move on to our next story. Index of 8 core industries, ICI, posted a growth of 0.1% in October this year, as against the 7.8% in the previous month. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, in October, crude oil, natural gas, refinery products, and cement output recorded negative growth rate. The production growth of 8 infrastructure sectors, coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity was 8.2% during the April to October segment in this fiscal, compared to 15.6% a year ago. In September, the core sector's output growth stood at 7.8%.
sir, linking all these figures to how we earlier spoke about, we need to get production increased, we need to actually make sure, and government investment, as you said, has fallen. So, and a lot of government investment takes use of these core sectors. So do you think that balance is going to be maintained? The government has to increase spending, so fiscal prudence is coming in. But no, I couldn't agree with you more. Fiscal prudence is important, but at the same time, you have to invest in the core sector. Now, what has happened with this October data is a bit of an aberration. October, remember, was 1 month where all the Indian festivals took place. Right. Now, if you look at the core sector is dependent on how festivals play out. When festivals happen, people don't go to offices, they are on long leave and everything. So you will see the core sector consumption will taking a hit. Whereas the services consumption will go up. Which is why I feel that when the October data comes, which will be seen in the next third quarter's GDP numbers, you will be able to capture the full impact of what has happened in October. But this October data is only about the core sector, which is about crude oil, natural gas, refinery products, cement, steel. Now, this is a month where a lot of the factories, a lot of things were closed. So they're not consuming much. So therefore, the output came down. So शायद हर वर्ष ही हम इस तरह का ये देखेंगे और अक्टूबर का वो ऐसा महीना था कि जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल एक ही महीने में आ गए. This year it did happen. एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है. आरबीआई ने कल से रिटेल डिजिटल रुपए का पहला पायलट लॉन्च शुरू करने की घोषणा की है. आरबीआई प्रेस रिलीज के अनुसार इस पायलट में 8 बैंकों को चरणबद्ध सहभागिता के लिए चुना गया है. आरबीआई की प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि इस पायलट में पहले चरण में 4 शहर शामिल किए जाएंगे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर. और बाद में शामिल किए जाने वाले शहर हैं अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला. और बाद में जरूरत अनुसार इस पायलट का विस्तार और बैंकों को और उपभोक्ताओं के लिए और स्थानों के लिए धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा. क्या कहेंगे आप? 1 महीने के करीब पहले होलसेल जो डिजिटल रुपी है उसका पायलट लॉन्च हुआ था. अब ये रिटेल डिजिटल रुपी का जो लॉन्च है ये शायद आम जनता के लिए ज्यादा मायने रखता है. कैसे देखते हैं आप? अभी तक देखिए, ये बजट में ऐलान किया गया था 2022 के बजट में, फरवरी 1 में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था कि एक डिजिटल करेंसी होगा. और एक चीज जो अभी भी पूरी तरह से साफ नजर नहीं आई है कि ये डिजिटल करेंसी में जो ट्रेसेबिलिटी है, जो वो ऊपर मतलब कौन खर्च कर रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है, इसकी जो एक सीक्रेसी जो डिजिटल करेंसी में नॉर्मली होती है, वो सीक्रेसी यहां पे मेंटेन करेंगे कि नहीं, वो अभी भी साफ क्लियर नहीं है. मैं मानता हूं कि ये डिजिटल करेंसी अगर वो सीक्रेसी अगर मेंटेन ना हो तो ये डिजिटल करेंसी वैसे ही रहेगा जैसे कि आज आम तौर में हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं. जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर अपने पेटीएम से या फोन पे से अगर आप पे कर रहे हैं किसी को, वो पेमेंट भी तो उसमें पैसे की कोई कैश की नहीं, वो नहीं है. तो डिजिटल करेंसी में तभी एक नया आयाम आ जाता है जब उसमें उसकी जो ट्रेसेबिलिटी जो है उसकी ट्रांजैक्शन की, वो मुश्किल होती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में होती है. और ये डिजिटल करेंसी, आपको याद होगा कि क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने के लिए एक सेंट्रल बैंक के कंट्रोल अधीन में आकर वो क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने के लिए प्रपोजल लाया गया था. तो हमें देखना पड़ेगा कि अगले 1 महीने में इसका जो रिटेल में जो इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से इसको लोग अपनाते हैं, किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं. ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने कहा कि बहुत कम शहरों में शुरू में होंगे, उसके बाद बाकी शहरों में जाएंगे. तो हमें देखना पड़ेगा, ये हर कदम में देखना पड़ेगा इसके क्या. उनके लिए भी लर्निंग एक्सरसाइज है, आरबीआई के लिए भी. एकदम. So there's a critical mass that is required for us to see the benefits of this. And right now, in terms of e-transactions, we've got that critical mass, and nobody thought that it would actually become such a big way that everybody would be paying through the internet. Right? Absolutely. But then in the e-transaction and the digital currency, the key difference would be that whether the transaction can be traced back to the people who are making those transactions.
And if they are being if that is traceable, then I would say that the lure of the digital currency will be that much less. Because if I can do the same transaction by using a bank account and through the UPI, I am performing the same task. Why should I go in for a digital currency? The lure of digital currency will come only if there is some sort of secrecy or opacity in the person who is making the transaction and the person who is receiving it. So I think, but then it's a very tricky area from a regulation point of view. RBI will have to know who is making the transaction, but not these data will not be accessible to all. So as I said, that it is a controlled experiment, and we must see how it pans out. Right, and it's about the discernment. Where is the fine balance and how you balance the two? Right. Absolutely. So we're going to go in for a short break, but we'll be back shortly. All our listeners, stay with us. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुक करते हैं शेयर बाजारों का, जहां से भी बहुत ही उत्साहजनक खबर है। सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक की बढ़त से रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख के चलते ये वृद्धि देखी गई। लगातार 7वें सत्र तेजी दर्ज करते हुए सेंसेक्स 63,000 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी 18,750 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.67% की वृद्धि से 418 अंक बढ़कर 63,100 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.75% की वृद्धि से 140 अंक बढ़कर 18,758 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.06% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.61% की तेजी देखी गई। The Sensex and the Nifty today closed at record highs. Both indices rose more than 0.5%. Both stocks gained amid positive cues from global share markets, extending gains for the 7th session in a row. The BSE Sensex finished above the 63,000 mark, while the Nifty settled above the 18,750 level. The Sensex rose 418 points or 0.67% to finish at 63,100. The Nifty also appreciated 140 points or 0.75% to end at 18,758. In the broader market at the BSE, mid-cap index gained 1.06% and the small-cap index ended 0.61% up. In the Sensex pack, 21 companies posted gains, while 9 logged losses. In sectoral indices at the BSE, 19 sectors logged gains. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,993 companies gained, while 1,486 fell. Shares of 123 companies remained unchanged. Okay, sir, as Sonu said, Utsahajanak. It's very encouraging news, but wait, watch and be wary. These are the 3 W words being given out. Whether it's profit booking or whether it's purchasing, your view, sir. It's a broad-based rally. Every sector has done well. It is also reflecting some confidence in the state of the Indian economy, and we discussed the GDP growth of 6.3%. Of course, this market's rally took place before the data came out, but broadly the market anticipates that the economic growth will be at a level which will be among the highest in any other major economy. Just one point. What we need to be watchful about in this rally is one, there are many IPOs coming up. So how will the market react in run up to those IPOs? Number 2, there's the US Fed chief is going to make a statement tomorrow. How will the market react to it? There are many other RBI going to Monetary Policy Committee will be coming out with its policy stance
on 7th of December, which is next week. Now all these factors and how crude oil prices behave. So right now is sort of, feeling good. People are spending money. Remember, the domestic institutional investors are booking profit and taking money out till yesterday. I do not know about today's figure. And the FIIs are putting in money. That's because there's an expectation that the Fed will slow down the pace of increase in its interest rates. आपको लगता है FIIs are back for good? I do not know whether they are back for good, but I think they are going wherever they think they can make some more money, make some gains, and they are coming back because the truth be told that the Indian economy is one of the few bright spots in the world right now. So they are coming here because they see an opportunity to make more money. If the interest rates in the Fed and the developed markets, they come down or they stop being raised the way they have been raised so far, then I think the FIIs will be here for some more time. And important thing is what RBI does and what the budget will have in February. We have got the Revenue Secretary statement this morning, which said that they're not going to do much about the capital gains tax issue in the budget. If it is true, the markets will also respond positively to that, because the markets don't want a change in the capital gain structure, which will probably be new winners and new losers. आइए देखते हैं रुपए का कैसा प्रदर्शन रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे मजबूत होकर 81 रुपये 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.35% की गिरावट से 106.44 पर था। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज ज्यादातर बढ़त का रुख था। केवल जापान का निकेई सूचकांक 0.2% की गिरावट में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.2% के उछाल में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.6% की बढ़त आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की वृद्धि में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.7%, फ्रांस का कैक 0.6% और जर्मनी का डैक्स 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। In the U.S. market, the S&P 500 and the Nasdaq indices ended down yesterday with losses in Apple and Amazon ahead of an upcoming speech by the U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell that could provide hints about the magnitude of future interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average ended flat. The S&P 500 lost 0.6% and the Nasdaq Composite Indices slipped 0.2%. In oil prices, they rose today more than 2.5% on signs of tighter supply. A weaker dollar and optimism over a Chinese demand recovery also pushed the crude prices up. Brent crude was trading at $85 per barrel, while WTI crude prices were at $80 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 260 रुपए की बढ़त के साथ 52,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 750 रुपए मजबूत होकर 61,900 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,776.60 प्रति आउंस पर था। हालांकि चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $21.80 प्रति आउंस पर थी। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया ऑयल प्राइसेस पर। हालांकि आज 2.5% बढ़े हैं, पर आपको लगता है कि वो खतरा टल गया है 140 और उन सब लेवल्स का? वो खतरा शायद टल गया है, 140 का खतरा, पर अभी भी जो एक ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल प्रोड्यूसर्स की जो एक कैप लगाने की सोच रहे हैं और रशिया यूक्रेन की जो स्थिति जो है वो अभी भी अनसर्टेनिटी अभी भी छाई हुई है। तो कोई अचानक नीचे आने का कोई उम्मीद नहीं कर सकते, पर हाँ अचानक ऊपर जाने का भी उम्मीद हम नहीं कर सकते। Thank you, AK sir, for coming on to our program. And now, before we close, a reminder of the headlines. GDP of the country grows 6.3% in July to September quarter of the current financial year. Index of 8 core industries posts growth of 0.1% in October. And domestic stocks close at record high. Sensex finish above the 63,000 mark. Nifty settles above the 18,750 levels. And that's it in this edition of our program. For now, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.